आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। फर्स्ट हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो दिस इज द आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। इन दिस डायग्राम अगर हम नीचे सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर कार्बन का परसेंटेज शो करता है। एक्स एक्सिस पर कार्बन का परसेंटेज शो करेगा और वाई एक्सिस पर जो होगा वो टेम्परेचर रेंज को शो करेगा। एक्स एक्सिस कार्बन परसेंटेज, वाई एक्सिस टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज जो है मैक्सिमम हम लोग लिए हैं वो 1900 1900 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 1600 और 1539 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर बी पॉइंट की बात करेंगे तो 1900 डिग्री सेल्सियस एंड ए पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस एंड 910 this is the and this is the 600 400 and so on. This is the percentage of carbon 0.8 1.7 and so on 4.43. This is the E dash line and this is the C dash line. But this is the region of liquid region. ऊपर साइड अब इसका लिक्विड रीजन है। दिस रीजन हमारा क्या कहला रहा है? दिस वन इज द ऑस्टेनाइट प्लस लेडिबोराइट। दिस इज द प्राइमरी सीमेंटाइट प्लस लेडिबोराइट। दिस इज द प्राइमरी सीमेंटाइट प्लस लिक्विड। दिस इज द ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। दिस इज द ऑस्टेनाइट। दिस इज द ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट and this is the ferrite plus perlite. This one is the steels and this one is the cast iron. So this is the basic diagram. And the iron carbon equilibrium diagram, this is the shown. The point A, that is 1539 degrees Celsius temperature on the diagram is the melting point of the pure iron. Where is the melting point? This is the point A. तो हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ए हमारा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है प्योर आयरन का। This is the 1539 degree Celsius. This is the diagram. 1539 degree Celsius temperature on the diagram is the melting point of pure iron. And point E shows the solubility limit of carbon in the gamma iron at 113 degree Celsius. Point E. This is the point E. This is the point E. डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर ये आपका पॉइंट ई है और ये पॉइंट ई जो है वो इंडिकेशन कर रहा है हमारा कितने टेम्परेचर पर 113 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो पॉइंट ई है वो शो करता है सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ कार्बन की इन गामा आयरन एट 113 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 1.7%। और जो आयरन कार्बन एलॉय कंटेन अप टू 1.7% कार्बन आर कॉल्ड स्टील and those containing over 1.7% carbon is called cast iron. यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन किया गया है कि जो आयरन कार्बन एलॉय है अगर वो कंटेन करते हैं कंटेनिंग अप टू 1.7% कार्बन तो उनको हम लोग बोलेंगे स्टील, और अगर वो कंटेनिंग करते हैं ओवर 1.7% कार्बन इज कॉल्ड कास्ट आयरन। एंड आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग 4.3% carbon is called eutectic cast iron. Above 4.3% carbon are termed as a hyper-eutectic cast iron, and those in the range of 1.7 to 4.3% carbon are called hypo-eutectic cast iron. That is, the iron carbon alloys containing 4.3% carbon are called eutectic cast iron. Above 4.3% carbon is known as a hyper-eutectic cast iron, and a range between 1.7 to 4.3% carbon वो हमारा कहला रहा है hypo-eutectic cast iron. This is the range: eutectic, hyper, hypo. तो आगे बात करते हैं तो जो the temperature point at which the change starts on heating is called lower critical point, and the temperature point where the change ends heating is called upper critical point. तो हमें ध्यान रखना है lower critical point और upper critical point. The range between the two critical points is known as a critical range. तो
जो अपर क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा इनके बीच की जो रेंज है वो हमारी कहलाती है क्रिटिकल रेंज. द रेंज बिटवीन द टू क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज अ क्रिटिकल रेंज, and the temperature at which the change starts, that is the lower critical point, is the same for all steel. The temperature at which the change starts, that is lower critical point, is same for the all steel, that is the 723 degree Celsius. But the ending point of transformation जो है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन का, अपर क्रिटिकल पॉइंट, वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट इन स्टील. लोअर क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेगा एट ऑल स्टील, लेकिन अपर क्रिटिकल पॉइंट वैरी करेगा ड्यू टू different carbon content in steel percentage. It will seem that that for a steel containing 0.8% carbon, that is your wholly pure light, there is only one critical point. तो ये हम देखते हैं कि स्टील जो containing 0.8% कार्बन, तो देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट. जो 8% कार्बन है तो केवल एक क्रिटिकल पॉइंट हम देख पा रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें क्या ध्यान रखते हैं कि जो स्टील है, स्टील विच लेस देन 0.8% कार्बन, उनको हम लोग बोलेंगे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, विच कंसिस्ट ऑफ अ फेराइट एंड परलाइट. और जो स्टील विच कंटेन 0.8% कार्बन is known as a eutectoid steel, which consists entirely perlite, and the steels which contain above 0.8% known as a hypereutectoid steels, which consist of a cementite and perlite. हाइपो में फेराइट एंड परलाइट, यूटेक्टॉइड में परलाइट, और हाइपर में हमें सीमेंटाइट एंड परलाइट. Cementite consists of a 93.33% iron and 6.6% carbon, जबकि perlite consists 87% ferrite and 13% cementite. So remember, cementite consists of 93.33% iron and 6.67% carbon, whenever perlite consists of 87% ferrite and 13% cementite. So this is the figure you have to remember, perlite and cementite. This is the diagram we have already discussed. In this diagram, on x-axis carbon percentage, y-axis temperature, and this is the region, this is the region, upper region, liquid, this is the austenite plus liquid, perlite plus liquid, and EC region, that is austenite plus ladopyrite. And there are niche, this is the region वाला जो है ये, that is perlite plus cementite. This is the steel, this is the cast iron, and this one is austenite plus ferrite. This region is the austenite plus ferrite, and this region is AES. This is the austenite. And the temperature range, that is 1539 degrees Celsius, 910 degrees Celsius, 600 and 400 and so on. So this is the diagram of iron carbon phase diagram, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिसमें कि हमने इस डायग्राम के स्टडी आउट किया.